Hi students, this is kdcvam from Zero Education. Today we are going to do Natural Resources chapter number 8 Social Science. Okay, let's start. Resources. Resources किसे कहते हैं? The elements which are utilized by human being or the elements which are useful to human being. कोई भी चीज जब इंसान को किसी भी प्रकार में काम आता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. The things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources. Anything which is used to fulfill the human needs becomes resources. The natural resources should have the virtue of utility and capability to work. The resources are made of the interactions of the three: nature, man and the culture. Right? यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज किस तरह हमें यूज होता है? बहुत अलग अलग प्रकार में यूज होता है. पहले फूड, एज अ फूड कैसे यूज होता है? फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू एग्रीकल्चर, milk and its products, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by the honeybees, etc. are used as food items or resource. The resource is a source of raw material. रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? एक एग्जांपल ले लीजिए, कॉटन. कॉटन क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, लेकिन वही कॉटन कपड़े बनाने के लिए काम आता है इंडस्ट्रीज में. दैट मीन्स दैट कॉटन बिकम्स अ रॉ मटेरियल फॉर दिस क्लॉथ इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्रीज. दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल. वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, wool, hides and meat available from animals, mineral ores, etc. from the raw material for many industries. Right? और रिसोर्सेज एनर्जी. एनर्जी में देखें, जैसे अभी देखें, पेट्रोल है तो आपकी गाड़ी चलती है. राइट? कोल है, नेचुरल गैस एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज एनर्जी. राइट? फॉर दिस आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. नाउ एनर्जी अदर देन these are like wind energy, solar energy, waterfall energy और water energy, hydro energy बोलते हैं हम उसको. तो these are also the energy type. Right? Next, types of resources. Resources can be classified on the basis of ownership, on the basis of re-availability, on the basis of distribution centers. चलो one by one देखते हैं. On the basis of ownership. Ownership, right? मालिकी, right? सबको ये जो घर है ये मेरा है, मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप. दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ओनरशिप. ये गाड़ी मेरी है, इंडिविजुअल ओनरशिप. लेकिन आर्मी, आप ऐसा बोल सकते हैं ये जो आर्मी है ये हमारी है, मेरी है नहीं, वो इंडिया की होती है. तो इट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स. ग्लोबल रिसोर्स, होल वर्ल्ड यूजेस, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल रिसोर्स. ओके. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी. री अवेलेबिलिटी मतलब फिर से हमको अवेलेबल होना. तो दो टाइप हो सकते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सनलाइट कभी खत्म ही नहीं होगा, विंड एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगा. दिस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और नॉन रिन्यूएबल, एक बार यूज किया खत्म हो गया. पेट्रोल आपने गाड़ी चलाई खत्म, वापस उसको नहीं बना सकते हैं. राइट? तो दैट इज द थिंग. तो दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये दोनों के डेफिनेशन में एक छोटा सा वर्ड याद रखना. इसमें क्या आएगा? रिन्यूएबल में इनएग्जॉस्टिबल, कभी खत्म नहीं होगा, और रिन्यूएबल में, नॉन रिन्यूएबल में एग्जॉस्टिबल, खत्म हो जाएगा. राइट? ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिवर्सल रिसोर्सेज, एज आई सेड, यूनिवर्सल, सबको एक जैसा मिलता है. दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ये कभी कोई बोल सकता है अमेरिका वाला कि ये मेरा है, इंडिया ऐसा बोल सकते हैं नाइट्रोजन सब मेरा है? नहीं, इट इज यूनिवर्सल. जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज. राइट? देयर आर मेनी रिसोर्सेज लाइक लैंड, सॉइल, वाटर, ये सब सबके लिए जनरल है. फिर है रेयर रिसोर्सेज. रेयर रिसोर्सेज किसे कहते हैं? कुछ मिनरल्स अगर आप देखो तो कोई देशों में कुछ देशों में मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड रेयर रिसोर्सेज. और सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिटरी रिसोर्सेज. ये ऐसी चीज है जो सिर्फ एक या तो दो देशों में, एक दो देशों में मिल सकता है. दैट इज कॉल्ड सॉलिटरी रिसोर्सेज. एग्जांपल क्रायोलाइट का मैंने फोटो दिया हुआ है. राइट? नेक्स्ट, प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये रिसोर्सेज का कंजर्व, प्रिजर्व, संभाल लेना जरूरी है, क्योंकि एक बार खत्म हो जाएगा फिर से नहीं मिलेगा. राइट? तो इसका सही उपयोग करना जरूरी है. किस तरह देखते हैं? कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द planning and conservation of resources.
Collect all the information about the availability of utilized, unutilized and probable resources of the region or a country as a unit. The limited or non-renewable resources should be used only where it is necessary to use them. Develop those resources, the quantity of which can be increased. The cheaper and the easily available resources should be used sparingly. मतलब अगर बहुत सस्ते में मिलता है ऐसा करके बहुत यूज नहीं करना है, उसे सही रीत से सही उपयोग करना जरूरी है. Those resources which are in limited quantity should be conserved. Necessary laws should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly. Citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of resources and a public awareness should be cultivated. Awareness, देखिए आप बच्चों को ये सिलेबस में इसलिए रखा गया रिसोर्सेज के बारे में, क्या आप में अवेयरनेस क्रिएट करें, बिकॉज आप लोग कल का जनरेशन हो, आप लोग कल के सिटीजन हो, तो therefore it is the awareness, right? Okay. Soil formation. Soil is formed due to the material available through the denudation, biotic remnants, humidity and air gap mixed up with it. Soil is a natural mixture of minerals and biotic elements which have the capacity to grow and develop vegetation. Denudation क्या होता है? रॉक में जब भी हीट के वजह से, समर में हीट के वजह से तिराड़ पड़ती है तो थोड़ा सा जगह हो जाता है, तो जब बारिश होती है तो पानी उसके अंदर चला जाता है. पानी जहाँ जाएगा वहाँ पे अलगे होगा, दैट इज लिकन्स पैदा हो जाते हैं, और लिकन्स क्या करेंगे, वो रॉक को कोतरने लगे, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने लगते हैं, राइट. और इस तरह वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर जब बारिश आती है तो वो सारे पार्टिकल्स चले जाते हैं, बह जाते हैं. तो इस तरह सॉइल फॉर्मेशन होता है. ओके, नेक्स्ट. Soil, the uppermost layer of the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered materials of the parental rocks and vegetation. Thin layer is prepared through the denudation of rocks. The humus formed due to the disintegration or decay of vegetation or insects. These biotic elements play an important role in the development of vegetation. The soil formed out of the same parental rock under different climatic influence is different, and hence climate plays an important role in the forming of different types of soil. अब different types of soil टोटल 8 हैं. चलो एक बार नाम देख लेते हैं. Alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil और marshy और peaty soil. ये soil जो है ये 4 मार्क्स में आपको पूछा जा सकते हैं. तो ये 4 मार्क्स में पूछे तो किस तरह लिखना है उसका एक आइडिया देता हूँ. चलिए देखते हैं. ये alluvial soil ले लीजिए. सबसे पहले टोटल 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट रहेगा प्रोपोर्शन कितना है, इंडिया में इसका प्रोपोर्शन कितना है. सेकंड क्या है, इंडिया में कहाँ से स्प्रेड हुआ है, कहाँ तक और कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ है. तीसरा है इसमें मिनरल्स कौन से हैं, राइट. फोर्थ है इसमें ये किस से फॉर्म हुआ है, किस चीज से, लावा से फॉर्म हुआ है, किससे फॉर्म हुआ है. पांचवा जो है इसमें कौन सा क्रॉप उगा सकते हैं. ये 5 पॉइंट का अगर आप चार्ट बना देंगे, 8वां alluvial soils जो है आपके हो जाएगा. So it is spread alluvial soil. It is spread over 43% of the total area in India. It is found in the northern plain from the Brahmaputra Valley in the east up to the Satluj in the west and in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. If the formation is due to the alluvial deposition by the rivers, more proportion of potash, phosphoric acid and limestone is found while proportion of nitrogen humus is less. अब ये नाइट्रोजन कम है तो क्या करना चाहिए, आपको पल्सिस उगाना चाहिए. पल्सिस क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन से आपको नाइट्रोजन इकट्ठा है. क्रॉप्स लाइक व्हीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल. रेड सॉइल, अब रेड दिख रहा है तो फेरिक ऑक्साइड होना ही चाहिए. तो इट ऑक्यूपाइज 19% of the total land of India. It is spread from Tamil Nadu in the peninsular India up to Bundelkhand in the north and the Rajmahal hills in the east up to the Kutch in the west. It is also found in the some parts of Rajasthan. The soil is red in color due to the presence of ferric oxide. 1 mark question. Now, lime, gravel and carbonate are found in this soil. There is deficiency of lime, magnesium, phosphate, nitrogen and potash in this soil. Deficiency मतलब कमी. Crops like millet, cotton, wheat, jowar, linseed, groundnut, etc. can be grown in this soil. Black soil. It covers up to 15% of the total area in India. It is found in entire Maharashtra, western Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and certain part of Karnataka. In Gujarat, Surat, Bharuch, Narmada, Vadodara, Tapi and other districts have this type of soil. It is formed due to spreading of Deccan lava. Lava rocks and climate are the main factors in the formation of this type of soil.
Next, proportion of iron, lime, calcium, potash, aluminium and magnesium carbonates are found more. It is considered to be quite fertile. It has capacity of retaining the moisture. Fissures, एक बार ये moisture dry होते ही ये क्या होता है, फट जाता है. That is called fissures develop. Crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco and udad are grown in this soil. As it is more suitable to the cotton, the soil is also known as black cotton soil. One mark question. Okay. Laterite soil. Laterite is derived from the Latin word later, that is brick. तो आपको fill in the blank में ऐसा पूछ सकते हैं. The meaning of later, that is brick. It is found in the higher area of the peninsular plateau of India. It is red color is due to iron oxide. The soil contains more of iron, potash and aluminium. When this soil becomes wet, it becomes smooth like butter, but when it dries, it becomes very hard. It is formed due to the change of dry and moist climate and also due to the prevention of silica-based material. The soil is less fertile, but cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, etc. can be grown with the use of fertilizers. Desert soil. It is found in the area where the climate is arid or semi-arid. The soil is sandy and infertile. It contains more dissolved minerals. Rajasthan, Haryana, southern Punjab have this type of soil. In Gujarat, it is found in Kutch and some parts of Saurashtra. With irrigation facilities, crops like millet and jowar can be grown. Mountain soil. It is found in the valleys and slopy regions of Himalayas at an altitude of 2700 to 3000 meters. ये याद रखना है आपको, 1 mark में भी काम आएगा, at the same time question answer लिखने में भी. Its layer is very thin and underdeveloped. It is found in Assam, Darjeeling, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kashmir. Pine and teak trees are grown. Forest soil. It is found within the altitude between 3000 to 3100 meters in the coniferous forests of Himalaya, Sahyadri, Eastern Ghats and Tarai regions of Himalayas. The upper part of the land becomes black due to the increase in the humus cost due to the decaying of leaves. Because forest है तो जो leaves तो ज़्यादा गिरेंगे, तो वो decay होने से upper part of the जो soil है वो black हो जाता है. But it changes it into blue or red color while going down within the land. It is found in limited area only. Crops like tea, coffee, spices, wheat, maize, barley, etc. can be grown. Marshy or peaty soil. It is found in the humid regions due to the accumulation of basic elements. It is considered favorable for paddy crop during rainy season. More of the biotic elements and minerals are found. Less of phosphate and potash are found. It is found in the Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of Northern Bihar and in Almora district of Uttarakhand. ये पैडी के लिए इसलिए फेवरेबल है क्योंकि पैडी को हमेशा वैसा पानी भरा हुआ लैंड चाहिए, या तो वो लैंड चाहिए. तो ये जो लैंड है ये बारिश में भर जाता है और उसमें पैडी अच्छी तरह उग सकता है. नाउ सॉइल इरोशन. द ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये सॉइल इरोशन से क्या होता है, लैंड का फर्टिलिटी चला जाता है और लैंड का फर्टिलिटी चला जाएगा तो एग्रीकल्चर कम होगा, उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा. The transportation of the land particles from one place to another with the help of moving air and water is called soil erosion. The agricultural production decreases. How measures to prevent soil erosion? Control of the grazing activity on the land. Plantation should be carried out in contour method in slopy regions. Plant trees in fallow land. Construct check dams where there are streams. Check dams बराबर जहाँ पानी बहता रहता है पे check dams रखना जरूरी है. Cultivate very deeply in the field to reduce the speed of the water. Soil conservation. Soil का किस तरह बचाव करना चाहिए, संभाल रखना चाहिए. To prevent the soil erosion and to maintain its quality, it is called soil conservation. Different remedies are used in different places depending on the location and problem. The soil conservation is very much necessary so as to prevent floods, which enhances the risk against the lives and property. Remedies of soil conservation. The roots of the trees बरोबर जो क्या करता है मिट्टी को होल्ड करके रखता है, right? And this way it doesn't allow soil to flow, just get away with the water. Plant trees in the rivers, gorges and on the mountain slope. A series of trees should be grown near the desert region to prevent the winds with more velocity so as to stop the advancing of the desert. The river floods should be controlled by diverting their flow in the other rivers in the dry river beds.
Remedies of soil conservation. The unrestricted pasturing loosens the soil layer on the mountain should be prevented. माउंटेन्स में ग्रेसिंग जो है वो कम अलाउ करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, जितना ग्रास खा जाएंगे तो मिट्टी में जो जो होल्ड किया था ग्रास में, ग्रास के रूट में, वो लूज हो जाएगा और मिट्टी क्या होगा, बह जाएगा. Methods like horizontal cultivation, terrace farm, etc. should be implemented. Humus content should be added to the soil which has lost its fertility. So, students, I hope you understood the chapter right. I hope you don't have any query. And if suppose you are having any query, you can write to me. You can write to me your suggestion also. Alright, I am available on Facebook as well as on YouTube. You can just check my channel kdcvam, okay, and I will request you to like, share and subscribe so that you get the notification of the next video or the next lesson or next chapter. Okay, thank you.